So hi Pranjal, welcome to this session and first of all congratulations for scoring well 100 percentile Thank you, sir. in this exam. It is considered to be one of the not one of the toughest but one of the trickiest exams because it's consisting of your domain subjects also, other subjects also. So let us start with your journey so far. So let's start with the very first question, how you are feeling right now. So, to be honest, I'm feeling quite excited. मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं और मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि 100 परसेंटाइल आ जाएगी, बट मैंने मतलब अपने आप को ट्रस्ट किया अपने आप पर और बस कर दिया. Good. So you focused on other subjects also. You picked up domain subjects. What were your domain subjects? My domain subjects were political science, geography, and economics, apart from English and general test. English and general test. Okay. So if I keep aside general test and English, right, aside, and if I look at only domain specific subjects, so were you taking tuitions also on these subjects in your 12th class? No sir, I was not taking tuitions. I mainly depended on the NCERT books, and actually it was mentioned in the CUET curriculum that the syllabus will be from the NCERTs itself, so I sticked to those only. Okay, so if you have to look at the stress part during this preparation throughout your journey, so how did you manage stress? Because generally students come to us, sir, it's very difficult, sir, tuitions भी हैं, आपका homework भी है, CUT का preparation भी है, so it's kind of it takes toll on students, mental health as well as physical health also. तो आपने कैसे manage इसको करने की कोशिश करी? जी सर, मैंने वैसे ज़्यादा स्ट्रेस कोशिश किया कि ना लूँ, बट वो तो ऑब्वियस है कि आ ही जाता है. बट मैंने ये था कि बोर्ड्स के वक्त मैंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर ली थी, तो मेरे बोर्ड्स में भी मतलब काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस थी. तो उसके बाद जब CUET का मैंने तैयारी शुरू की तो दैट वाज बेसिकली रिवीजन ओनली. एक दो चैप्टर्स एडिट थे जो बोर्ड्स में नहीं थे, तो बस उसके लिए मैंने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा डिवोट किया और थोड़ा बस बाकी अगर स्ट्रेस रिलीवर मैं कहूँ तो मैं म्यूजिक सुनता था और थोड़ा गेम्स वगैरह खेल लेता था, तो उससे स्ट्रेस रिलीव हो जाता. Okay, so generally students do not take NCERT books seriously. So what you have to say about NCERT books? सर मैं तो ये कहूँगा कि NCERT बुक्स को ही सीरियसली लिया जाए, और मतलब उसमें कहा है कि मेन बस जो भी सिलेबस है वो सारा NCERT से है, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं कि कोई और रेफरेंस मटेरियल की ज़रूरत है. बाकी अब बीइंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे को कोई ज़रूरत पड़ी, बट कॉमर्स और मैथ्स का साइंस स्ट्रीम का तो मैं नहीं कह सकता, बट ह्यूमैनिटीज़ के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. Okay, so whenever we are preparing for domain specific subjects, so how it is important to read the concept or just to cram the stuff for board point of view, board exam point of view, or from CUT point of view, because CUT is objective and board is descriptive plus objective. So how to go about NCERT books? ध्यान से पढ़ना चाहिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, अच्छा सा समझना चाहिए, कैसे? सर मैं तो ये कहूँगा कि जो बोर्ड्स की जो क्लास है उसमें हमारे को सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ लेने चाहिए थॉरली, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्या है इसमें, कौन से चैप्टर में क्या है. और लाइन बाय लाइन मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि एक एक चीज़ याद करी जाए, ऊपर से एक जिस्ट आप ले लीजिए अगर पढ़ के, तो उससे सब समझ आ जाता है. और उसके बाद जब रिवीजन करो तो आप जैसे मतलब एक बार अगर पहले पढ़ा हो तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो इतना मुश्किल नहीं होता बाद में. ओके, सो प्रांजल, हम ये बात पूछते हैं कि अब अगर हम प्रिपरेशन के अंदर मॉक टेस्ट जो होते हैं हमारे, चाहे वो जनरल टेस्ट के हो, इंग्लिश के हो, डोमेन स्पेसिफिक मॉक टेस्ट हो, तो मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस या रोल क्या रहता है? सर मेरे लिए सबसे ज़रूरी मॉक टेस्ट ही थे, क्योंकि अगर हम बिना मॉक टेस्ट देखे जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब हमें कॉन्फिडेंस आएगा उस टाइम पे. मॉक टेस्ट से हम अपनी खुद की स्ट्रैटेजी हम प्रिपेयर कर पाए थे. मेरे को ये, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब भी मॉक टेस्ट मैंने दिए तो मेरे को पता लगा कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही है और कैसी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ. तो मेरे को मॉक टेस्ट ने काफ़ी हेल्प किया है और उससे मेरे को पता चला कि मुझे कैसे अपनी ओन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और उस हिसाब से चलना. Okay, so Pranjal, if I look at the time slot, the duration of the exam, it's 3.5 hours exam, long exam. So you need to focus a lot. You need to prepare. You need to build your stamina also to read 3 domain specific subjects also, GT also, and English also. So then how you build your stamina for 3.5 hours, because it's a continuous stretch and you have to sit for 3.5 hours. सर उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ता है. एक सवाल में अगर हो गया तो आराम से थोड़ा टाइम लो. उसमें टाइम काफ़ी होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना हमें
टाइम लगता नहीं है, तो उसके बाद अगर एक पेपर हो गया तो उसके बाद हमारे को मतलब 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट मिल जाता है, तो उस वक्त रिलैक्स हो जाओ जैसा भी किया है उस हिसाब से। And Pranjal, अब हम if I look at all the subjects, domain specific and general subject in English, which was the most challenging? So general test. General test. Why you felt that general So- test was very challenging? So actually it consists मतलब a wide variety of topics and मतलब जैसे मैथ्स मैंने पढ़ी नहीं है 12th में, तो उसके भी थोड़े टॉपिक्स थे, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े करने पड़े थे, और जनरल नॉलेज भी है उसमें, तो जनरल टेस्ट थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, उसके लिए आपको मतलब काफ़ी टाइम की प्रिपरेशन चाहिए। So अभी सबसे ज्यादा स्कोर आपका किन 4 या 5 या 3 सब्जेक्ट्स में रहा आपका? सर मेरा मेन डोमेन में सबसे ज़्यादा मार्क्स रहे मेरे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में। ठीक है। सो अब इस स्कोर के साथ प्रांजल आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं? सर मैं और कहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं टारगेट कर रहा हूँ, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बीए प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। So yes, specifically why you want to go for BA in political science and economics? So first of all, these two are the, according to me, are the most interesting subjects for me. And आगे मुझे जैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे लिए काम आएंगे। Okay. मेरे इंटरेस्ट के भी है। तो आगे BA after generally civil service aspirants they go for MA also in one of the areas. So अगर आपको MA करना होगा तो आप किस में? So most probably political science. Political science में, and you are determined that you want to get into civil services. Yes, So ये civil services अचानक जर्नी में पहले से था या CUT के बाद आया, इस स्कोर के बाद आपको लगता है कि हमें सिविल सर्विस का करना चाहिए? सर नहीं, सिविल सर्विसेज का तो मैंने काफ़ी पहले से चूज़ करके रखा था कि इसी में करनी है, और मैंने 10th में ही डिसाइड कर लिया था, क्योंकि आर्ट्स फील्ड मैंने नहीं तो मेरे को ऐसे साइंस में मिल रहा था, तो मैंने डेलिबरेटली आर्ट्स लिया है ताकि। अच्छा, ये एम पहले से ही था आपका that you wanted to go for civil services, that's why you picked up humanities in 11th class and you went for CUET also. So Pranjal, अगर हम Hitbullseye ने अगर resources की हम बात करें, so you were provided with books also, mock test series also, doubt sessions also. Throughout the journey Hitbullseye आपके साथ रहा, तो आपको Hitbullseye के सपोर्ट में कितना हेल्प हुआ? सर Hitbullseye ने ही मेरी मेन जनरल टेस्ट में जितने आए हैं मेरे, वो Hitbullseye की वजह से आए हैं, नहीं तो मेरे को लगता नहीं कि मैं इतनी खुद से तैयारी कर पाता। उनके रिसोर्सेज काफ़ी हेल्पफुल रहे, और खासकर जो मॉक टेस्ट थे उनके मतलब दे हैव अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, और बहुत मतलब काफ़ी हेल्प हुई इससे, और प्रैक्टिस करते रहो तो काफ़ी हेल्प हो जाती है आगे। और अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे इम्पोर्टेंट कि जब आप कोई टेस्ट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे रहे थे या GT दे रहे थे या इंग्लिश दे रहे थे, was there any surprise element in the exam that you didn't prepare initially and you found that you saw that particular topic, particular question? हाँ, क्वेश्चंस जो पहले कुछ ऐसे थे कि हमने पढ़े और वही डायरेक्ट वही आ गए, कहीं ना कहीं मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं पढ़े थे, बट वो ऐसा है कि स्किप करके फिर वो ऐसे मुश्किल नहीं आती। जैसे इंग्लिश के पेपर में मैं देख रहा था एक था कि आपको लेटर दे दिया और उससे आपसे हाँ जी। पूछा जाएगा कि सैल्यूटेशन पार्ट, द Yes, कंक्लूडिंग पार्ट क्या होना चाहिए, इफ यू वांट टू एड्रेस समबडी लाइक दिस, सो हाउ विल यू एड्रेस, एंड क्या होना चाहिए। ये शायद हाँ, ये कॉमन सेंसिकल था, बिकॉज जनरली इसके अंदर जो होता है लेटर राइटिंग जो होता है वी डू टिल 10th क्लास और 8th या 9th क्लास, उसके बाद तो लेटर राइटिंग होता भी नहीं। इफ यू आर नॉट राइटिंग ईमेल्स और नॉट राइटिंग लेटर ऑफिशियली 12th क्लास के लोग नहीं लिखते हैं, सो देयर यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। जीके में आपको क्या लगता है कि डेप्थ कितना होना चाहिए स्टूडेंट को? न्यूज़पेपर का रीडिंग इंपॉर्टेंस कितना है, या न्यूज़ को देखना चाहिए, जो हमने आपको नोट्स दिए वो हेल्पफुल कितने रहे? तो इज इट ओनली नोट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ electronic media also and notes also? I think so it's a combination of electronic media as well as the hard resources। और मैंने खुद थोड़ा मेरे को आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, 12th क्लास से मैंने शुरू कर दिया था, बट जो बुक्स Hitbullseye ने प्रोवाइड किए उसमें पूरे 2022 के ऑलमोस्ट हर मंथ के करंट अफेयर्स उन्होंने कवर किए हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे उस टाइम पे। तो जीके के अंदर काफी लोग बोलते हैं कि सर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन द एंटायर सिलेबस, द स्टफ, द जीके इज वेरी वास्ट in terms of content. So क्या प्योर क्रैमिंग से अच्छा होता है या थोड़ा सा चीज़ों को समझ के जीके करना अच्छा होता है? सर क्रैमिंग तो मैंने अपने उसमें तो बिल्कुल नहीं की। इसमें जब मेरे लिए जो वर्क किया सर वो ये था कि मतलब थोड़ा बहुत रीडिंग और बाकी जो मॉक टेस्ट है ना उसमें अगर रिपीटिशन हो जाए ना तो वो खुद ही मन में बैठ जाता है, और मॉक टेस्ट में काफ़ी सवाल थे जो हमें मेंस उसमें भी आए। ओके, हाँ जी। सो Pranjal, one last question.
फ्यूचर एस्पिरेंट जितने भी हैं हमारे जो CUET 24 में अपीयर होंगे, तो उनको आप कुछ कहना चाहते हो? फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए मेरा यही कहना रहेगा कि आप पहले अपने बोर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें, और अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ कम टू हिटबुल्सआई। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, और मतलब इतना वो स्ट्रेस ना लो, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और ऐसे हिटबुल्सआई मतलब ऐसे हैं कि वो आपको बेटन प्रोवाइड करेंगे, बट द रेस इज ऑल योर्स, यू हैव टू रन इट। Okay, all the best, Pranjal, for all your future endeavors. Thank you, sir. And keep smiling, keep working hard. All the best for your civil service exams in future also. Thank you, sir. So guys, we were interacting with Pranjal in order to know certain things that how to go about, because this test is no doubt after 12th class students generally for the first time the students would be writing any exam. You talk about CUET, you talk about any competitive exams, career oriented exam. So it is generally tricky for students also, because they have to manage their school studies also, regular studies also, and CUET studies also, and their tuitions also as well. So it's quite stressful for students also, and therefore the entire journey, if you look at the journey part, it is full of excitement also, couple of anxious moments also, stress also, and anybody who is mentally very strong would be able to sail through smoothly. So now let's meet our next top scorer, and let's welcome Riddhi. Let's welcome Riddhi now. So Riddhi, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, Riddhi. So again, congratulations on scoring well and CUET exam. So right now, again, very simple question. So how are you feeling right now? I'm like, it's a surreal moment. Like during the preparation, I was so anxious that whether I'll get through it. Like I thought it would be a very difficult exam. Like I've not given any. It was actually my first computer-based test, like a huge, massive one. Really? So I have given many, but not like this, like major one. So Riddhi, if you look at what were your subjects? I gave English, accountancy, Yeah. business studies, mathematics, economics, and general test. Six. Okay, so why you picked up this additional subjects, like in the domain specific subjects, in specifically economics, etc.? I know that they are part of your 12th class also, humanities stream also, but are you really interested in these subjects, or you picked up these subjects because they are quite scoring? Actually, at the first time when I filled the form, I just filled for 4 subjects like English, accountancy, maths, and business studies. But when the portal was reopening again and again, I filled economics also, I filled general test also. Like I saw so many videos that you should keep something extra. Like economics, I'm honestly speaking, I didn't study much. But yes, I just kept for a safer side. Actually, I originally chose 4, but then for a safer side, more additional. So Riddhi, अभी आपका score अच्छा आ गया है. So with this score, what you want to do, in which college you want to take admission, which course, graduation, in which stream you want to pursue? I'm aiming for Delhi University BCom Good. Honors in SRCC. SRCC BCom Honors. So why you are going for BCom Honors? Is there any specific goal in your mind that you want to go for, you want to achieve this? Actually, I'm also doing CA, like I have given my CA foundation Okay, good. just now in June. Okay. So I think BCom Honors well aligns with CA syllabus. Okay, So BCom my main Honors. aim is- So what's the difference between honors and normal BCom? BCom Honors give more wider aspects because like it gives more exposure, more specialization, Depth into in-depth study of in-depth the study subject. of the subjects. Okay, that's why the Delhi University is preferred, because those who want to go for honors in any discipline, let it be sciences or arts or commerce, so they prefer Delhi University. So let's talk about your journey during the course of preparation. So how did you manage your school studies, tuitions, and your along with CA Chartered Accountancy and CUET preparation? It's quite stressful. If you जो लोग सुन रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि इतना कैसे मैनेज कर लिया होगा. So रिद्धि, आपसे सभी ऑडियंस जानना चाहेंगे, फ्यूचर एस्पिरेंट्स जानना चाहेंगे कि how you managed all this. Okay, so my board exams got over on 31st March, and after that, like I was so confused because I had full CA foundation syllabus left. I had full CUET to do. So first I focused, like CUET was before in May and foundation was in June. So for I got the test series of Hitbullseye. So first I had to plan that whether I have to start from scratch, like whole syllabus should I revise, or should I go with the test series. So I just started with
doing from the scratch. Like I took accounts and I started doing from scratch, but then I realized that there is no use to solve the questions like full big questions, 5 markers that only MCQs will be asked. Then I took the test series. I gave around 18 to 20 tests of each subject. Like my main basic thing was that Hitbullseye, these test series was a big help. Like I guess my 90% marks are because of these test series. So aspirants, आपने सुना कि टेस्ट सीरीज और टाइम मैनेजमेंट थ्रू टेस्ट सीरीज टू लर्न आवर मिस्टेक्स एंड टू डू आवर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो टेस्ट सीरीज रिधि को बहुत हेल्प किया and she was able to manage a couple of things on her own because of test series. So अगर हम Riddhi, if you look at all the subjects, accounts you picked up, accounts, economics and other such domain specific subjects, and then general test in English. If you look at 4 or 5 subjects, which one was the most challenging? English. English. Because, yeah, Okay. yes. Why you felt that? Actually, I felt ki English. It is like so vast, you never know from where, like so much syllabus, synonyms, antonyms, we never know from where they will come. So it was very vast, and I guess it would only help like if you would have given more and more questions were the basic key for English. Like I felt first I was so scared like English because in boards also the least I scored like 94 in Okay, English only. okay. So I was so anxious about it because like anywhere they can ask you some meaning of the word. So I guess so for that question practice was main thing. Okay, so English को improve करने के लिए newspaper reading and vocabulary कितना important है? Vocabulary is so much important, like reading new and new words, and it was that ki whenever I used to attempt the test, if I got that question wrong, it is important that you check the meaning also of that question if you have got that wrong. Otherwise there is no use of that if you are getting wrong and you are just leaving it. So understanding the meaning is also very important. Okay, now if I look at the last year's English exam and this year's English exam, so level was a little higher. So there were a couple of tricky questions also, like that you have to write a letter and the salutation part would be something like this, and there were no figure of speech likewise they were in last year, and there were no analogy based questions also. So instead fill in the blanks, RCs, 3 RCs, and the one new feature aspirants which we saw this year was poem based RC. So Yeah. how did you tackle this poem based RC? Because most of the students, especially commerce students and science students, they are generally not comfortable in reading and understanding poetry. So poetry Riddhi आपने कैसे manage किया? Actually, I had practiced just 1 or 2 questions of poetry of this part, I guess, in the test series. Somewhere it might have come. So in the exam, I got 3 comprehensions. 2 were that passage and 1 was that poem. So at first I was like scared, but yes, after reading the poem, they had actually the questions were simple. That they had asked some meanings only from the poem itself. They have asked some meanings, some stanza they have written, some literary devices and all. So that was not that much challenging. Okay, now if I look at GT part, because most of the students they are pretty anxious about GT, general test. So if you look at 3 areas, so which one is most challenging? Current affairs. Current affairs. And what about the depth required or the focus required in current affairs? So actually for the current affairs I referred to the Hitbullseye, that so many PDFs, I had taken an online course on that. So many PDFs were given related to like important dates, some important events or like various aspects were there. So I guess they are very helpful for me in that preparation of current affairs. Okay. And what about your mathematics part, the reasoning part in GT? The quantitative aptitude, yeah, again for that I would say ki maximum questions practice only tells you that which type will come in the exam. So like once you know the way of questions, so as many questions come you will be able to tackle it. So knowing the way is more important. Okay, so Riddhi, अगर future aspirants को आपने कुछ advice देना हो अपनी तरफ से, the 24 those who will be taking this writing this test in 2024, so what 2 or 3 important things they should keep in mind? First thing is attempt as many tests as you can, as many mock tests. Like I would recommend to purchase Hitbullseye series because it was really very helpful. Like I gave 18 to 20 tests of it. So test series number 1 is very helpful, and number 2 is that
I guess, stick to NCERT. For maths, I was very scared that from where the questions will come, but I just focused on NCERT, and yes, all the paper was from NCERT, honestly. Like, all the questions were very, not that much high level, NCERT level. Like, so practice more and more NCERT, do as many as test series, practice NTA's mock tests this year as well as previous years. So these are main things. Okay, Riddhi, all the best for all your future endeavors and chartered accountancy and other such your dreams. So, anything specially you want to say about our Hitbullseye efforts? Yeah, Hitbullseye, I already said in the beginning that I scored 90. My 90% score is because of the test series that I gave. So test series are very, very core part. So I would recommend that Hitbullseye mentors also give, like, I had the mentors always assisted me whenever I was in, like, I had some problem or I felt that I'm not scoring well. They gave me enough tips so that I could ace the exam. So I would really thank Hitbullseye for my All the best, Riddhi, once again. All the best, right? thank you. So guys, so we were interacting with Riddhi, and she gave us couple of tips regarding, and she shared the experiences that she went through, the excitement and the challenges she overcome while preparing for CUT. So next we have got Yash, and time to call Yash and to interact with Yash to know more about his journey to CUT and scoring good percentile. Welcome, Yash. Hello, sir. So yes, Yash, welcome once again, and congratulations on scoring well in CUT exam. So Yash, what were your subjects? Business studies, accounts, economics, physical education, English, legal studies, and general test. Okay, very interesting. Physical education, if you look at physical education, guys, so physical education seems to be not so theoretical subject. So what type of questions were there in physical education Very domain? general, very general. Whichever we study for the board exams, nothing apart from that. Just the most general and the most basic knowledge. Okay, so yes, if you look at NCERT books, right? Generally, it is mentioned that NCERT books are quite helpful. So, how would you rate NCERT books when it comes to understanding the domain-specific subjects? For this NCERT, actually, to be honest, I did not use the NCERT Okay. books. So what the books I used were the study material of Hitbullseye Okay. and a bit of YouTube of the Hitbullseye and some of the books which I used for the board Yes, exams. आपको जान के ये बहुत surprised होगा, guys, that we at Hitbullseye, because generally it is mentioned that NCERT note or NCERT books are quite helpful and useful also, but generally while preparing for exams, students generally they go through the entire concept because they have to write the answers in board exams, so they do not focus on the important concepts, or that they do not have this thing in mind that objective questions can also be prepared. So we at Hitbullseye, we thought initially that हर एक लाइन में से हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है. So आपको ये जान के देख के ठीक लग रहा था, कैसा लगा कि हर from every line we created questions for domain specific objects? For the Hitbullseye, the study material which we got was just appropriate and just perfect for the CUT because जितना पढ़ा उतना ही, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. राइट. सो यश, अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, राइट, जी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. जी. तो आपको क्या लगता है कि टेस्ट सीरीज से हेल्प मिलती है या सिर्फ अपने आप सोच के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आ जाती हैं? टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड बस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अपने जो यहाँ पे फैकल्टी है उनके गाइडेंस का, बिकॉज दे गिव अ मच बेटर व्यू दैन व्हाट वी गेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स दे डू हेल्प अस बाय मतलब managing we time. understand that where we are weak and where we are strong and give more attention to the weak parts. So आपका भी एग्जाम जो रहा होगा 3.5 hours जी. ड्यूरेशन का रहा होगा. So it's very important to have stamina also, to have mental focus also जी. to carry out the 3.5 hours smoothly. So आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करी थी? क्या कुछ दिनों में लास्ट में ऐसे तीनों सब्जेक्ट्स इकट्ठा देना शुरू किया था, और यू वर टेकिंग सेपरेट सब्जेक्ट? I was taking separate subjects, but what I was doing was I was giving online tests. Okay, so जैसे अपने Hitbullseye के डैशबोर्ड पर है वैसे. So what happened with that is I was completing the test much before the time limit. So the best thing I could do was finish the test,
go through it 2 times more. After that, I was taking a nap so that my strength was maintained and rather increased for the next test. Next test. Okay, okay. So अब यश आपने स्कूल की स्टडीज ट्यूशंस भी होंगी? No, there was no tuition. There was only the coaching at Hitbullseye. Okay, कोचिंग और स्कूल की स्टडीज को बैलेंस को कैसे मेंटेन किया? By the time I joined the Hitbullseye crash course, my school was already over. School. So you are lucky in all these respects, right? Yes, very much lucky. So आगे यश अब आपको with this score, what's your score? 723 out of 800. Yes. So with this score, so which college you want to take admission to? Delhi University, because I had given 4 universities, Chitkara, IILM, Sharda and Delhi University, but उसमें अगर शायद हो पाए Delhi University में. Let's hope. Let's कौन सा hope कोर्स होता कौन से कोर्स में आप जाना चाहते हैं? मैं एक्चुअली BCom LLB में घुस चुका हूँ नारसिमोनजी में. अच्छा, ये ऑलरेडी अब एंड उसकी भी कोचिंग में Hitbullseye से लिया था. अच्छा, BCom you prepared BCom LLB and yes. NLAT. NLAT. You took NLAT also वहाँ पे coaching मैं from us. BA LLB कर रहा हूँ. Okay. But BCom LLB जो अब जब appoint In किया case था, if you get better opportunity in Delhi University, then you will leave. I will. For Alright, sure. okay. So in future, you already are doing one course with one prestigious university. So Yes. your future target is to become eminent lawyer, chief justice, Yes. or civil service aspirant, or you want to get into some other area? I will stay in the legal area. I'll just be a judge or a lawyer. Judge or lawyer. And यश, अगर आपको लगता है कि future aspirants हैं तो उनको they'll be having tuitions also, guys, and their regular studies also and competitive exams also. How it is difficult for any 12th class student to manage all the areas, those who are preparing right from the beginning? It is very difficult to manage that area. The only thing we can do is just sacrifice all your fun for a short period of time. For example, fun किस sense में आप कह रहे हैं? फन एज इन हम लोग फोन से दूर फोन रहें। दूर देख लेते हैं, लैपटॉप में हम लोग वेब सीरीज देखते रहते हैं, उससे बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़ता है, विच माय पेरेंट्स आर वेरी हेल्पफुल. मैं उन्हें अपना फोन जमा कर देता, फोन लैपटॉप दोनों, एंड दे वर लाइक मेरा जिद हो गया था कि मुझे फोन चाहिए, बट दे आर वेरी हेल्पफुल, उन्होंने नहीं दिया. Okay, so guys, it's very important because time, we have got this very precious commodity. We all have got 24 hours. तो अब हम कैसे manage कर सकते हैं at your age? 12th class students, they are easily distracted by so many things around, especially the electronic media, phone and web series, etc. आप लोग बहुत देखते होंगे इनको. So when we are preparing for any challenge or any exam, it's very important to take all these distractions away from your life so as to focus on your challenge or your career you want and dream you want to pursue. So okay, Yash, it was really nice talking to you, and Thank all you the very much, best sir. Thank you for very your much, all sir. future endeavors. So guys, this was Yash, and he shared couple of tips with us, and he was lucky that he didn't have tuitions, and he took up the last day's preparation with us. So he was quite lucky in that respect that school was over and tuitions were not there. So but in case if you've got tuitions also, etc., then it's very important to take care to manage your time wisely. This is the most precious resource other than your intelligence. We all are equally intelligent, guys, so nothing to worry about. लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के पास न्यूरॉन्स ज़्यादा है या DNA में उसके इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता. Those who manage their resource, the very precious resource, time wisely, they excel, and rest they just do the analysis, right? So okay, now time to welcome Yoshita now. Okay, Yoshita, welcome please. Okay, Yoshita, first of all, congratulations for scoring well. So, what was your score? I got मेरे को physical education में 99.27 percentile है. Congratulations. In general test I got 93.26 percentile, and in English I got 91 percentile. Okay. So, out of these 4 or 5 subjects, why you picked up the physical education? Because generally girls, they are not interested in picking up physical education. Actually मैं एक नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने पहले तो वो 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करे थे, साथ में आई थॉट कि थोड़ा सा एक इजी सब्जेक्ट भी होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक दे आर अ बिट डिफिकल्ट. जो आपने 3 सब्जेक्ट्स जो पिक किए वो साइंस स्ट्रीम से थे, राइट? तो उन तीनों में से which one was the most challenging? I think so. It No was. doubt it varies from person to person, right? किसी का कोई वीक हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है. तो आपको क्या लगा? मेरे को पर्सनली हमेशा से फिजिक्स बहुत टफ लगा है, बट उसमें आई डिडंट स्कोर लाइक
दैट वेल, मेरे को एक्चुअली बीए प्रोग्राम आगे परस्यू करना है, Okay, तो okay. उस हिसाब से आई हैव प्रिपेयर्ड। ओके सो योशिता, आपको साइंस के साथ सीयूटी और ट्यूशंस भी ऑब्वियसली शायद हों, सो स्कूल भी चल रहा होगा रेगुलर, राइट? सो इस पूरे टाइम टेबल को शेड्यूल कैसे किया आपने प्रिपरेशन के? बेसिकली जब तक तो मेरे बोर्ड्स थे और मैंने अपने बोर्ड्स पे ही फोकस किया पहले तो मेनली, कि हाँ जितनी भी एनसीईआरटी पे अपना मैंने फोकस रखा। उसके बाद आई जॉइन हिट्सबुलआई आफ्टर माय लाइक प्रिपरेशन, आई थिंक सो इन अप्रैल। तब से फिर मैंने बेसिक मेरी जो प्रिपरेशन है सीयूटी की वो कहीं ना कहीं इन अप्रैल ही शुरू। April, so you started focusing on CUT in the month of from the month of April, right? तो इसमें जो था फिजिक्स में, बिकॉज फिजिक्स ना, इफ यू लुक एट बोर्ड्स फिजिक्स, काफी लोगों को डाउट होता है गाइस कि बोर्ड एग्जाम कैसा आता है और CUT का एग्जाम कैसा आता है। सो एनी आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जब हम फ्रॉम वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, व्हाटएवर यू फॉलो इन 12th क्लास, सो वो प्रिपरेशन CUT में कितना हेल्पफुल रहती है? बेसिकली सारा आता तो एनसीईआरटी से ही है, मतलब आप अगर अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो, जैसे आई थिंक सो मेरे को मैथ्स सबसे ठीक लग रहा था, उस पेपर में मेरे को सबसे ठीक मैथ्स का ही लगा पीसीएम में से। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो और उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आई थिंक सो इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड होता है सारा पेपर। और हाँ, आपको प्रिपरेशन करने के लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप 5-5 वाले नंबर वाले क्वेश्चन लिख के वो सब नहीं जो करना। हम ज्यादातर बोर्ड्स में करते हाँ, हैं, सो boards में करते हैं। दैट यू शुड हैव दिस कॉमन सेंस कि वो यहाँ तो आने नहीं नहीं, वाला है। यहाँ नहीं आने वाला। और हमें बेसिकली आप टेस्ट, आई थिंक सो टेस्ट इज टेस्ट सीरीज, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। मान लिया यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वन इज टॉपर थ्रू आउट, स्कोर्ड, you scored well in 12th class also, 10th class also, but do you know do you think that it's very important to manage time wisely? एग्जैक्टली। जैसे आप एग्जाम या टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट को एनालिसिस करते हैं, तो कैसे आप एनालिसिस क्या करते हैं, देखते हैं? टेस्ट जब हम स्पेशली अगर मैं जीटी की बात करूँ तो मेरे साथ एक्चुअली यही हुआ कि जीटी में आई थिंक सो मेरे को भी ऐसा लगता है कि जीटी के अंदर मैं थोड़ा बेटर स्कोर कर सकती थी। मेरा वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा पुअर हो गया। थोड़े बहुत क्वेश्चन आई थिंक सो मैं और अटेम्प्ट कर सकती थी, या थोड़े बहुत क्वेश्चन सही और हो सकते थे अगर मैं थोड़ा आराम से बैठ के करती, क्योंकि मैं थोड़े हड़बड़ाहट में I just messed up it. So I think so टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो तभी डेवलप होती है धीरे धीरे करके। हर एक बंदे का अपना अपना होता है कि कोई पहले इजी क्वेश्चंस करना प्रेफर करता है, कोई बंदा ऐसे प्रेफर करता है कि पहले जितने भी And what was your strategy while taking the exam? मेरा पर्सनली यही था कि हाँ पहले फटाफट इजी जो आपके जैसे स्टैटिक पार्ट है वो फटाफट कर लो, जो एकदम देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, पहले उन्हें करो, एंड वेयर यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन उनको बाद में आप करें, ठीक है। सो अब स्ट्रेस होता ही है, एंजाइटी भी होती है बिफोर द डी डे। सो अब जब एग्जाम दे रहे होते हैं, एग्जाम से पहले भी स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, एंड ड्यूरिंग द एग्जाम भी होता है, तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? पहली चीज तो उसमें यही होता है कि आपको सोना अच्छे से है। Okay, so guys, keep this in mind. Take proper rest before the exam. To please don't go by 10th class or 12th class वाला कि एक रात पहले पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कुछ होता नहीं है, right? Very good. सोना अच्छे से है, मतलब कई बार हम क्या होता है कि पढ़ भी नहीं रहे होते लेकिन स्ट्रेस इतना हो जाता है कि नहीं हम जाग रहे होते हैं, तो पहले तो सोना अच्छे से। फिर वहाँ पे जब आप एक बार पहुँच जाते हो, आपने आराम से एटलीस्ट आप आधे घंटे पहले पहुँच जाओ पेपर स्टार्ट होने से, ताकि आप एनवायरनमेंट में अपना थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर सको, राइट। तो उसके बाद आराम से आके बैठ जा रहा है। ऐसे बहुत स्ट्रेस होता है बट उसको एटलीस्ट अपनी एंजाइटी में ना कन्वर्ट होने दे, क्योंकि फिर वो आपके पेपर को ही परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको स्ट्रेस वैसे होता था, ट्यूशंस हैं, स्कूल है, देन CUT's प्रिपरेशन है, देन बुलसाइज होमवर्क आल्सो, हिटबुलसाइज होमवर्क आल्सो, सो वो अपना शेड्यूल आप कैसे करते थे? कितना घंटे आप पढ़ाई किया करते थे CUT के लिए या स्कूल के लिए, कंबाइंड कैसे करते थे? तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने CUT की प्रिपरेशन आफ्टर अप्रैल में शुरू करा, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट
8 o'clock के अराउंड, तो मैं ऑफलाइन आती थी यहाँ पे, तो 2:30 तक मैं घर पहुँचती थी। एंड उसके बाद फिर आफ्टर टेकिंग अ रेस्ट फॉर लाइक 1.5 आवर, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। तो बेसिकली मेरा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट का एरिया था वो था जीके, उसमें स्टैटिक पार्ट, द न्यूज़, करंट अफेयर्स, वो सब कुछ। तो सबसे पहले फिर मैं वही कहती थी कि हाँ वो कर लेते हैं, And क्योंकि it is very surprising to know that at your age 12th क्लास के बच्चों को जीके अच्छा लगता है। जनरली 12th क्लास के बच्चों को जीके अच्छा नहीं लगता, बट योशिता ग्रेट। सो जीके के आप फोकस करते हैं। तो उसके बाद जीके के बाद फिर क्योंकि मेरे पास एक एज ये भी था कि मैं +2 तक मैथ्स पढ़ा है, तो फिर जो भी जीटी का मैथ्स वाला पार्ट होता था वो इजी लगा आपको? थोड़ा सा, हाँ वो इजी साइड पे लगता था। देन इंग्लिश थोड़ा सा टफ था, स्पेशली जब वो वर्ड मीनिंग्स, क्योंकि वो कहीं वोकैबुलरी वो फिर कहीं से भी एंटोनिम सिनोनिम, वो पेपर में एक वो नहीं था कि यही से आएंगे, यही होंगे। जिस बाकी सब्जेक्ट्स में हम सोच सकते हैं, बट इंग्लिश इज वाइड इन टर्म्स ऑफ एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस एक्सेट्रा, वो ज्यादा हो सकते हैं। तो मैं ट्राई करती थी, वैसे तो मैं बहुत जल्दी थक जाती, लाइक उस समय तक थोड़ा थक जाती थी, लाइक आफ्टर जीके एंड द लॉजिक रीजनिंग वाला पार्ट। उसके बाद लेकिन आई यूज्ड टू ट्राई कि चलो अब यहाँ तक आपके 2.5 आवर्स हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए। आप आगे फिर ऐसे लाइक 1.5 आवर का वॉक कर ली, ब्रेक लिए थे। उसके बाद फॉर लाइक 1 आवर आई थिंक सो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर इंग्लिश, एंड उसके बाद आई यूज्ड टू कंसंट्रेट ऑन माय डोमेन स्पेसिफिक्स। Okay, so yeah, overall total 3 to 4 hours, and managing your time wisely. You need to devote wisely, divide the time wisely to devote to focus on domain specific subjects also, and general test and English language also. No doubt English is wide. So Hitbullseye का जो material था, जो books था, resources, वो आपको कितने helpful लगे? एक्चुअली वो काफ़ी हेल्पफुल थी, स्पेशली अगेन मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था लाइक द करंट अफेयर्स पार्ट, बट वही करंट अफेयर्स भी इतने वाइड होते हैं, तो आपको अब वो भी पिछले 1 साल के पूरे 1 साल के, आप ऐसे तो है नहीं कि सारे न्यूज़पेपर उठा के फिर से पढ़ना शुरू करोगे। तो ऑब्वियसली लाइक द बुकलेट थी जो उनकी, yes. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। उसको आप एक बार बस रीड कर लो तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। और उसके बाद जब मैं ऑफलाइन क्लास में भी आती थी, तो वहाँ पे भी जो सर पढ़ाते थे या मैम पढ़ाते थे, तो वो चीज़ ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया, और आई थिंक सो मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ गया। और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को योशिता, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे इस 12th क्लास ट्यूशंस एंड स्कूल आल्सो एंड रेगुलर स्टडीज आल्सो एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो कैसे आप उनको कुछ 1 या 2 टिप्स अगर आप देना चाहते हैं, एडवाइस फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस? पहले तो ये कि एनसीईआरटी पे फोकस करो, डोमेन स्पेसिफिक, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है, आपके जो टोटल मार्क्स एग्रीगेट बनता है। तो पहले तो अपने एनसीईआरटी में फोकस रखो। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको टाइम मैनेज तो करना ही पड़ेगा। इंग्लिश जैसे हो गया, तो आप हर रोज़ के कोई 5 या 10 वर्ड्स ऐसे हर रोज़ अगर आप शुरू से प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक साल के स्टार्टिंग से, 1 महीने पहले नहीं, साल के स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो वो आपको बहुत ईजी रहेगा कि आप हर रोज के 5 या 10 कर रहे हो। आपको बेयरली 10 मिनट देने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए। तो आप बेसिकली आ जाके टाइम मैनेजमेंट ही है, और अपना थोड़ा सा फोकस, क्योंकि 12th है तो यू हैव टू 12th एग्जाम है। और कुछ ऐसी चीजें जो सेक्रीफाइस करनी पड़ी होंगी आपको, जैसे टीवी कम हो गया होगा, हैंग आउट फ्रेंड्स के साथ कम हो गया होगा, कुछ ऐसा करना, सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे? बताइए फ्यूचर एक्सपीरियंस को। अब ऐसा तो करना ही पड़ता है, अब ऑब्वियसली अगर आपको अपने मार्क्स स्कोर करने हैं या फिर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है। तो अब जैसे मेरे को अपना फ़ोन थोड़ा कम करना पड़ गया था, और क्योंकि एग्जाम्स हो गए थे, तो उसके बाद तो एकदम ऐसा था कि चिल हो जाता है ना, यू फील रिलैक्स्ड एंड यू टेक अप एवरी गैजेट एंड यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। Okay, so guys, आपने सुना कि in order to gain something you have to lose something. Very important tip given by Yoshita to all of us. And okay Yoshita, all the best for all your future endeavors and future objectives. So what exactly you want to do in future after this course you want to get into? Basically I want to get into BA program in DU. And so, what after BA? Most probably I think so I want to go in civil services. Civil service. So हमारे पास एक और एस्पिरेंट सिविल सर्विसेज के, होप सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज ऑब्जेक्टिव एंड ड्रीम। ऑल द बेस्ट योशिता। Thanks. So guys, this was Yoshita, and
almost if you look at all the interactions you will find, conversation you'll find two things pretty common that you need to first of all focus on, right? And everything needs time. Let it be your regular studies, let it be your exams, and you need to sacrifice a couple of things from your life also, like phone and web series and television and media, social media platform, etc. So ultimately things move around keeping your calm, focusing on whatever you want to do, managing your time wisely, and very important, taking the advice or seeking the advices from your mentors and implementing those advices seriously. So this is all as of now. So this is your host Rajiv Markande signing off for the day. All the best, guys. CUT aspirants, in case you have got any query, any doubt regarding CUT, you can write to us or you can just call us. You have got our numbers, and we have got full complete department team of counselors and mentors to help you in your all future endeavors. Thank you.